सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी? सो अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो तो मुझे ज़रूर बताना एक बार कमेंट में, और नहीं भी आ रही हो तो मुझे ज़रूर बताना। ओके, लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। एक बार सबको जॉइन हो जाने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एजुकेशन पर्पस, हेलो, कैसे हो? एंड गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो इन द कमेंट्स मेरी आवाज़ क्लियर है कि नहीं। हे जॉय, एजुकेशन पर्पस, आई एम ऑल्सो गुड। ओके, इट्स क्लियर। हे सूर्यवंश, ओके। हे ऋषिकेश, सो गाइज, नाउ व्हाट विल डू, मोस्टली हम संडे टू संडे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। मोस्टली गाइज हम यही करेंगे, संडे टू संडे अराउंड 9:30 या 10 को हम लाइव सेशंस करेंगे ताकि आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस। अर्पित इज टेलिंग ग्लैड टू सी यू हियर। थैंक यू अर्पित। हेलो रवि। हे नबील, कैसे हो? एंड क्या चल रहा है? हाउ इज़ द प्रोसेस गोइंग ऑन? यू कैन कॉल मी नबील टुमारो। हे लिनोवो। ओके, ओके। हे अनूप। सो गाइस, जैसे जैसे आप कमेंट करते हो एक बार मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि आप अभी क्या कर रहे हो। आर यू स्टूडेंट? आर यू लुकिंग फॉर जॉब? और लाइक फॉर व्हाट पर्पस यू गॉट कनेक्टेड टू दिस मतलब दिस चैनल? किस पर्पस की वजह से आप इस चैनल से कनेक्ट हुए? सो आई गेट एन आइडिया एंड आई कैन डिलीवर दैट टाइप ऑफ कंटेंट टू यू गाइस। Rishikesh, sir, your video always boosts my confidence to work in SaaS learning. Thank you, Rishikesh. Okay, student. Sir, how are the job after learning clinical SaaS? Mainly for fresher. Is there an opportunity for fresher? See, abhi recently, like Madhu, I have recently made a video. Okay, in that I have guided the particular process. See, even in the industry, if new vacancies are not there, there will be always opening for fresher. The reason is, see, a fresher joins to a particular company, okay, and he works for 6 months mostly, or 3 months for a trainee position. The role will be trainee clinical SaaS programmer or statistical programmer, maybe. After this 3 months or 6 months, he is going to be promoted at the level of statistical programmer 1. Either after 6 months, mostly after 6 months, they will give you this position. And after 1 year, after working 1.5 year on the statistical programmer 1 position, you are going to get promoted. So have you ever thought, if a fresher is joining after 6 months, he is getting to another position, after 1.5 year he is getting promoted to another position, who will fill the fresher position, the previous position? A senior is never going to come and work for the fresher position, right? They always want the increment and growth in terms of the role as well, in terms of salary as well. So yes, there is always a opening, but the case is, whenever my market cycle is down, the opening will be low. Whenever market cycle will be up, the opening will be high.
That's the only case. Okay. Arpit is asking, I'm working as a process engineer in IT industries. Arpit, you can check my previous video. There are a lot of videos. Saurabh, for what solutions? Like which kind of solution you're looking for? Ravi, there is a channel called, I think, Salesforce Jungle or Rohit Puri. For Salesforce regarding updates, you can check on his channel or with him. Guys, see, initially to become a data analyst, there is not much need of statistics or mathematics. Yeah, for longer run, it's good to have, but shorter term, uh, there is no such requirement. The reason is, see, after getting invented, the calculator is having the capability of doing calculations. You don't need to do the calculations. Similarly, softwares are there. They are much capable than us to get the calculations done within the fraction of seconds. So we don't need to do the statistics or mathematics part with the softwares. You just able to, or you just need to operate the software. Okay, you should know the coding language, so you can tell the software whatever statistics or whatever things you need to perform. So that's answer of your question. Education purpose is asking, after getting internship, the same company can take us on. Yeah, Rishikesh, for sure. सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को उनका हक कब मिलेगा, कितने साल लग जाएंगे? सी देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द मैकेनिकल एजुकेशन, बट आपको ये सोचना है कि वो मेरा एजुकेशन था. नाउ व्हाट आई नीड टू डू, देयर आर टन्स ऑफ रोल. Okay, and the reality is softwares and technology is getting implemented everywhere. हर जगह implement हो रहा है. So that's why you should learn some technology or you should learn some software. And there are some good roles in mechanical as well, but yeah, uh, there is a variation in the growth and salary part. Prishti Dev, hello sir, good evening. अभी क्या हाल है? मुझे लगता है कि जो ओपनिंग्स हैं अपकमिंग 3-4 मंथ्स में उनकी सिचुएशंस थोड़ी बेटर हो जाएगी. और ओपनिंग्स अभी भी हैं, जैसे मैंने बताया लास्ट मंथ ही टीसीएस में हायरिंग हुई फ्रेशर्स की, बट थोड़ी सी कम है. मार्केट साइकिल में अप डाउन हमेशा चलता रहता है. Karthik, the videos which you have uploaded past week was very much relatable. You know, those with more quality content was always. Karthik, which videos you're talking about? Could you tell me the title of the video so I can get the idea? Rathod, clinical SaaS mostly used procedure and coding की practice कर लो. Rathod, like base is must, advance is must, clinical का knowledge is must, and getting like if you have created table listing SDM Adam, that is good too. So जितनी चीज़ें होनी चाहिए clinical SaaS के लिए. Okay. Arpit is asking, sir, I've seen your previous video, but I know, but I have some confusion on which platform I can connect you directly. Arpit, on my channel about section, there is an option one-to-one counseling. Through that, you can book a slot for a particular time and we can have a call.
Lenovo, yes. राठौड़, लाइक आई फील क्लिनिकल साइंस जो पोजीशन है उसमें मोस्टली आपको कोडिंग करनी रहती है. योर रोल इज लाइक यू विल बी डूइंग द कोडिंग, डेटा एनालिसिस. सो थियरी पार्ट इम्पॉर्टेंट है, बट यू कैन से 10 या 20% मे बी, and mostly it's like 80% the clinical like coding knowledge. अल्फा मैन सर, सैप वर्सेस AWS में क्या डिफरेंस है? सी, AWS लाइक दैट इज़ अ क्लाउड प्लेटफॉर्म. वहाँ पे आप एक काइंड ऑफ व्हाट वी से वर्चुअल मशीन है वो. वहाँ पे आप सॉफ्टवेयर्स, जैसे कि मैंने मेरा फेसबुक लॉगिन किया, उसके अंदर मैं कहीं पे भी लॉगिन कर रहा हूँ, मेरी डिटेल्स आ गई, मेरे मैसेजेस एंड फोटोज, ऑल सो ऑन थिंग्स. सिमिलरली AWS एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लॉगिन करके आप जो भी एक नया सिस्टम ओपन हो सकता है. इट्स अ क्लाउड. ओके. एंड वहाँ पे आप जो भी चाहे कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रख सकते हो. मोस्टली कंपनीज क्लाउड यूज़ करती हैं. अब क्लाउड में AWS अकेला नहीं है, एज्योर भी है माइक्रोसॉफ्ट का, एंड और भी कुछ प्लेयर्स हैं, ओरेकल भी है. बट AWS अच्छा खासा मार्केट, आई थिंक क्लाउड में सबसे ज़्यादा मार्केट AWS होल्ड करता है. एंड AWS में आप सब कुछ कर सकते हो. जैसे कि मैं अपना इनिशियल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं जब सिस्टम में लॉगिन करता था, उसके बाद AWS का लॉगिन आता था. फिर हम AWS में लॉगिन करते थे आईडी पासवर्ड डाल के. जब हम AWS में लॉगिन करते थे तब एक नया सिस्टम पूरा ओपन होता था. वो नए सिस्टम में सब कुछ, फाइल सब कुछ, यानी हम जो भी काम करते थे वो एक क्लाउड पे स्टोर होता था. ठीक है, वो हमारे सिस्टम में नहीं रहता था. सो दैट इज़ द AWS. अब कमिंग टू सैप. सैप एक ERP सॉफ्टवेयर है. ये मतलब एक तरह का डेटा मैनेज के लिए, डेटा टनलिंग के लिए, कैसे एक फ्लो होता है. ओके. इंडस्ट्री में जो पूरा फ्लो चल रहा है, फ्रॉम सेल्स टू लेके, मतलब हायरिंग से लेके, सैप के अलग अलग मॉड्यूल होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द नीड यू कैन लर्न द पर्टिकुलर मॉड्यूल. ठीक है, तो एक ERP है और एक क्लाउड है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है. ओके, guys, just give me 1 minute. Okay. Rishikesh is telling, sir, recently get base as certified. Now working on clinical science certification. Does certification? See, base as certification is enough to get any interview to be cracked or to get selected. See, like certification might help you to get interviews, but mostly like how the interview is going on, whether they, as an candidate, as an employer, they liked you or not, overall interview, so then they will select you. But yeah, certification can help you to get interviews, and for that basis is enough. Nikhil is asking how get fresher job in clinical science. Nikhil, how to find job for freshers, already on this topic I have made a video, you can go and check there. Civil Circle. Civil Circle, I already have a Telegram channel. You can check in about section, channel about section, you will get it. Lenovo is telling, do online courses help in getting placed in IT companies? See, any course is valuable only if you are getting the knowledge, if you are able to perform in the interview. That's the sole purpose. So if you are able to perform in the interview, then it's good. Here's Illuminan. Technical, how to prepare for IT sector. I'm mechanical engineer. Technical, I have made a lot of videos. You can go and check. Ankur, I'm new to your channel. In which profile you're working now? Ankur, I'm not working anymore.
You can go and check my previous videos, so you'll get an idea. Yeah, I'm working as a trainer and consultant, and meanwhile I'm having some projects as well, but not officially working with any company. निखिल कौन कहता है? क्या बात है निखिल, हमेशा की तरह. अल्फा मैन इज आस्किंग एज अ मैकेनिकल गाय क्यों बेस्ट रहेगा सैप? आई सजेस्ट AWS. अल्फा मैन. Rathod, you can check on internet, maybe you can get some data sets. Niharika is asking, hello sir, I have done MCA 2015. After that I started working as a technical. See Niharika, first thing, आपने already SAPM का कोर्स स्टार्ट कर दिया है. सो आप जो सीख रहे हो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जो भी सीख रहे हो उसको अच्छे से सीखो. जो भी यानी एज आप जो सीख रहे हो वो है SAP MM. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ लाइक उसे अच्छे से सीखो. एंड सेकंड चीज़ ये होगी कि आप जहाँ से सीख रहे हो उनसे गाइडेंस भी लेते जाओ. लाइक लाइक जो भी वो सिखा रहे हैं और जो भी आप सीख रहे हो, क्या आप सही तरीके से सीख रहे हो कि नहीं. ओके. एंड उनसे पूछते जाओ कि आगे क्या होगा, कितना टाइम लगेगा जॉब लेने में, हाउ इज़ द ओवरऑल प्रोसेस. ये सब चीज़ें आप जान लो तो बेटर है आपके लिए. सो गाइस, मुझे एक बार कमेंट में बताना कि वीडियोस में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, बिकॉज आई फील कि ये वीडियो थोड़ा सा ब्लरी आ रहा है. ओके. ठीक है. Madhu is asking, where can we get job notification for clinical SaaS? Good question. Let me make a detailed video on this topic, Madhu. Okay. So you can wait. Within 3 days, you'll get a detailed video on this. Bhagat is asking, can you help in data analysis also? Yeah, Bhagat, data analysis, but on which software? Python, R, SAS? Rathod is asking which questions are mostly asked in clinical SaaS position. There are tons of questions. They can ask you like, what do you know in clinical SaaS? First, you need to explain what do you know. Then, accordingly, they might ask the relevant question, or they might ask you the not relevant, the questions you might don't know. See, the interviewer is like trying to understand you, how much you have learned, and how much you know. So they'll ask you from beginning to end. There is no particular question. Yeah, but there are some common question like do you know about clinical trials? Have you created SDM, ADAM, table listing? Okay, what is protocol? What is CRF? Like what is SAP? Like there are some documents and few things you should know. Like in SDM, how many domains are there? Data sets are there. Like few things are there. That depends upon the interviewer how he is taking the interview. They'll start from base, then advanced, then might be clinical. And in clinical they might ask you sometimes very few question, maybe like 5% question, and sometimes they might ask you like more questions as well. It totally depend upon the interviewer. Lino is asking what are the deduction and enhanced salary of a IT employee. That is totally dependent upon the employer's salary. Suppose if you are getting a package of 3 lakh, so in actually the like
it comes around 25k per month. But in hand, mostly you'll be getting 22 or 23, between 22 to 23,000. Okay, remaining will be deducted. Depend upon your salary, deductions are there. Data analytic अर्पित तौफिक, डेटा एनालिसिस के फ्रेशर को जॉब ओपनिंग मिलती है क्या? ऑफ कोर्स तौफिक, इंडस्ट्री का साइकिल चलता ही ऐसे है, नीचे से पोजीशन ऊपर जाता है। आप सोचो कि हर बंदा जो जॉब कर रहा है वो ऊपर जाने वाला है, नीचे की पोजीशन पे तो आने नहीं वाला, राइट? ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सीनियर तो वापस फ्रेशर का काम करने से रहा या जूनियर का काम तो करने से रहा, ठीक है? अब समझो आपको एक्सपीरियंस हो गया 8-10 साल या 15 साल का, आपको बनना है मैनेजर, आप फ्रेशर का काम करोगे नहीं तो फ्रेशर का काम कौन करेगा? हू विल डू ऑल दोज़ वर्क? सो दे हैव टू हायर फ्रेशर्स, तभी वो साइकिल रोटेट होगी और तभी वो साइकिल चलेगा। एंड फ्रेशर में ही कंपनी को रेवेन्यू होता है, एक्सपीरियंस पर्सन में उतना रेवेन्यू कंपनी को नहीं होता है, बिकॉज दे हैव टू पे वेरी हाई सैलरीज। राठौड़, yes. Rahul, there is no particular institute which will be best for you. It totally uh, it totally depend upon what you are looking for. There can be multiple institute. There can be some specialized institute, like I'm like dealing with SaaS only. I'm training the student who are into SaaS only. So there can be multiple institute. There can be some institute they are dealing with Python, R, SAS, full stack, and tons of things. Okay, so it depend upon like what you are looking. Are you looking for data analysis, and data analysis on which software? Are you looking for full stack? So depend upon the requirement. You need to figure out which is the best institute. Devasis, Chat GTP is like another Google, guys. Chat GTP is nothing but that is another Google. Google can have a threat with Chat GTP. Even Google will not have the threat with Chat GTP, because Chat GTP is this much size, Google is like this much size. So Chat GTP is like for helping the programmers or the people. They are not going to replace us. So suppose if you want to know some programming or coding, you can just go and ask to Chat GTP. He will give you some codes, or he can help you, assist you in a better way. But they are not going to do your work. Nikhil, about this, how to find job in clinical SaaS, how to get notification in clinical SaaS, how to get job in clinical SaaS. I'll make a video within 3 days. Horon Consulting Group. Vivek, I'm not having any idea as of now, but I'll have a look and I'll let you know. See, the first soft skill can be communication skill. You can like you should be able to explain anything. You should be able to understand. Okay, and second, like you should be like try to behave well. You should able to maintain good relations with your colleagues, team, seniors. Okay, so communication and making good connections, that is like more than enough. Rohit is asking, sir, I messaged you on Instagram. Rohit, I'll check surely. On Instagram, there are tons of messages. That's why sometimes it become delay. Bhagat, if you are like doing BCom, you can go in finance sector or audit sector. You can do Python or Power BI or R or SAS. Okay. Within these softwares, you can learn SAS or Python and Power BI. Any of these. Vivek is telling, sir, off campus में intro call नहीं आते after clearing their coding test.
और देयर सेगमेंट आते हैं, बट या समटाइम्स डिले थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, दैट्स अ प्रॉब्लम। तू जा रे, द नेम इज़ एंड द क्वेश्चन इज़ आस्किंग, सर मेरा 6 इयर्स का गैप है, मेरा सिविल इंजीनियरिंग 2017 में हुआ है, मैं अब डेटा एनालिसिस करना चाहता हूँ, कैसे जॉब मिलेगी? आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जाके चेक कर लो, मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है मैकेनिकल टू डेटा एनालिस्ट, वो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ आइडिया, मतलब कुछ नहीं, ज़्यादा ही आइडिया मिलेगा। सो गो एंड दैट चेक दोज वीडियोस। Rohit, it's not, and how to, I'll make a video on that. Infan is asking, hi sir, I have question regarding with how you select topics to upload. See, YouTube is all like, you guys are like all about, it's like family, another family. तो सेलेक्टिंग अ टॉपिक, इट्स व्हाट इज़ अ नीड, मतलब क्या नीड है आपके ऑडियंस की, क्या चल रहा है। ओके, सो कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं दैट इज़ हैपनिंग एंड दैट कैन हेल्प टू योर व्यूअर्स, सो यू कैन मेक अ वीडियो। डोंट नीड टू सेलेक्ट अ टॉपिक, सी लाइक what is something that can help your audience. It can be anything, or it can be like many things. So that's all. Okay, sir, only Power BI can give us good job or any. See, Power BI enough cannot give you a good job. But if you are doing SAS SQL, okay, if you are doing SAS SQL, that is a separate thing. But if you are doing Python, then with Python you should learn Power BI. Okay, even with SAS you can combine Power BI. So either SAS or Power BI, either Python or Power BI, both are good. Rathod nahi. Rohit is asking, does really pharma industry have vacancies for fresher? What is the time period for vacancies? See, इंटरव्यू का साइकिल होता है 3 और 6 मंथ्स का, सो विद इन एवरी मोस्ट प्रॉब्ली 6 मंथ्स या 3 मंथ्स के इंटरवल में वैकेंसीज निकलती है। सर मैं बैक एंड डेवलपर के लिए कोर्स किया है, बट सो आपने कोर्स कब कंप्लीट किया है मुझे ये भी बताओ। रंगनाथ इज आस्किंग, सर व्हाई यू लेफ्ट जॉब? सी, I started this training and I was loving this job. Like loving this job means ये जो मैं कर रहा था training and consulting. The only like the break like एक point वो था कि जैसे जो stability मुझे industry में मिलती वो stability यहाँ मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। If you are doing something, if you are doing something, you are on. बट आई हैव डिसाइडेड लाइक कि जो चीज़ मुझे करना है, और मैंने लाइक जॉब छोड़ी बट वो प्रोफेशन नहीं छोड़ा। मोस्टली आई एम डूइंग द सेम। ओके, आई एम द सेम पर्सन, बट मुझे ट्रेनिंग ज़्यादा पसंद था तो मैंने वो चूज़ किया। सो आई एम ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। Tawfiq is asking, can we do data analysis course after 7 to 8 years of domain experience of Tawfiq? Of course. Bhagat is asking, can I combine Python or other languages in line? Python. See, you should learn one data analysis language and another data visualization tool. So in data analysis, either you can choose SAS, R or Python. In visualization, you can choose Tableau or Power BI. Hey Shubham. So स्टार्टअप्स पे अगर अप्लाई करो तो जो वो शॉर्ट टास्क करने को देते हैं वो क्या टफ होता है? नहीं। सी, वो आपको चेक करते हैं कि यू शुड नॉट गेट द आंसर, लाइक आपको हर चीज़ का आंसर रहना ज़रूरी नहीं है, बट यू शुड एबल टू अंडरस्टैंड, यू शुड एबल टू कम्युनिकेट विद देम। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछो, दे आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू। इट्स इन स्टार्टअप, इट्स नॉट लाइक दैट कि वो उन्होंने टास्क दिया आपको आंसर ही लाना है। इट वॉज नेवर लाइक
इन द एमएनसी कंपनीज एज वेल, ये ज़रूरी नहीं कि आपको लाइक आप आंसर एकदम करेक्ट ला के दे दो, बट हाउ यू आर अप्रोचिंग द क्वेश्चन, हाउ यू आर डीलिंग विद इट. Pankaj is asking, Muskan Gaming is asking, give your home tour. ओके, सो अभी फ़िलहाल मैं क्या बोलता हूँ, कंप्यूटर पे लाइव हूँ, सो इसको पकड़ के वायर के साथ घूमना मुश्किल है, बट श्योरली किसी दिन ज़रूर. Pankaj is asking, what question will ask in written test in clinical science programmer experience interview? It's depend upon Pankaj. कितना एक्सपीरियंस है, आप मुझे बताओ 1 2 3 4, तो मैं आपको बता सकता हूँ. देखो, एक्सपीरियंस के लिए मोस्टली क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपने जो लास्ट प्रोजेक्ट में काम किया है, क्या काम किया है, आपने कैसे, अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपने टीम को कैसे हैंडल किया, कैसे प्रोजेक्ट को डिलीवर किया, ये क्वेश्चंस होते हैं. कोडिंग या ऐसे ज़्यादा क्वेश्चंस ना के बराबर होते हैं, कम होते हैं, ठीक है. एक्सपीरियंस लेवल पे प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं कि आपने क्या प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, क्या स्टडी थी, वो क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ठीक है. फ्रेशर लेवल पे कोडिंग के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं. प्रोपोगेंडा बस्टर इज आस्किंग, सर आपके हिसाब से आईटी में रिसेशन और कितना चलेगा? सो गाइज, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिसेशन नहीं बोलता, करेक्शन बोलता हूँ, क्योंकि लास्ट कुछ ईयर्स में मतलब मैं काफ़ी बार देख चुका हूँ, और ये काफ़ी बार, आप एक बार हिस्ट्री को जाके चेक करो. सो दिस दिस इज़ द पार्ट ऑफ प्रोसेस वी आर गोइंग थ्रू. सो और कब तक चलेगा, तो मुझे लगता है कुछ कुछ मंथ्स तक चलेगा ये. और इस टाइम पे क्या होता है, वैकेंसीज थोड़ी सी कम हो जाती हैं, दैट्स ओनली थिंग. और ये साइकिल पर ऊपर नीचे होता रहता है, यू कैन नॉट मैप इट, ये कब ऊपर होगा कब नीचे जाएगा. Call me Shubham is asking, I'm working in IT company in Bangalore as a content analyst. My package is 10 plus LPA. My job is non-technical. Still, my package is good. Can we make a video together so that call me Shubham? Okay, sure. Call me Shubham. There is an option one-to-one counseling. You can choose any of the option, and we can, or you can ping me on Instagram. There will be option in the channel about section, or you can choose the counseling option. From there we can directly connect, and surely we can have a word and we can make a video together. Bhagat is telling, sir, if I take training from, then will you help me to get placement? Of course. Yes, Bhagat, of course. I'll try my best. Umesh, see, I can promise you one thing, Bhagat, for the knowledge. For the second thing, for the job, I'll make you capable. And yes, I'll help with my network as well. But my more focus, like most of the focus will be on like the training part, like how you can get a good knowledge so you can stand in any interview and you can crack it even. Mrs. telling, sir, I'm having 3 plus of experience in testing. I believe 10. Pankaj, 2 years, okay. लिनोवो का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव लर्न फ्रॉम जॉब. जॉब से मैंने एक चीज़ सीखी कि कितना भी लाइक सी कितने भी आपके कलीग्स अच्छे हों, बुरे हों, व्हाट्स ऑन, एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए मैटर क्या करता है, आपको जो टास्क मिला है आप वो सही से कर रहे हो कि नहीं. दैट्स ओनली थिंग. आपका मैनेजर से रिलेशन कैसा है, आपके टीम से क्या रिलेशन है, ओवरऑल चीज़ें कैसी हैं, वो मैटर कुछ लेवल तक करता है. अगर जो काम आपको असाइन हुआ है वो आप अच्छे से कर रहे हो, दैट्स ऑल. सो कभी भी आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपका काम ही सब आपके लिए सब कुछ है. तो जो काम मिला है उस पर ज़्यादा ध्यान देना, और फिर बचा हुआ टाइम पे कम्युनिकेशन बिल्डिंग,
क्यों क्या होता है कि कोई कितना भी अच्छा आपने किसी कनेक्शन या रिलेशन रखा हो, जब काम की बात होती है तो सब पहले अपना काम देखते हैं। Everyone is going to finish their work and they are going to find their time for their personal life. तो समझो आपको हेल्प की ज़रूरत है, बट आपका कोई कलीग है, तो इनिशियल डेज में आपका कलीग या आपके फ्रेंड आपको शायद हेल्प करेंगे, बट हमेशा वो हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि शायद आपको या किसी न किसी को तो हेल्प की कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी। तो समझो 2-4 बंदे जो हमेशा अवेलेबल रह रहे हैं, तो मतलब वो ज़्यादा टाइम तक, तो कोई भी ज़्यादा टाइम तक हेल्प नहीं करता इंडस्ट्री में। तो हेल्प यानी यू शुड लर्न लाइक हाउ टू डू द थिंग्स बाय योर ओन, कैसे खुद से करना है। क्योंकि आगे जाके जब आप जैसे एक्सपीरियंस पोजीशन पे बढ़ते जाओगे, कोई फ्रेशर हायर होगा, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, बट द थिंग इज उनके क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं होगा। तो आप क्या करते हो कि आपका जैसे एक्सपीरियंस बनते बढ़ता जाता है, आप समझते हो कि भाई ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली, तो मैं ये काम फिनिश करूँगा पहले मेरा, उसके बाद ये टाइम पे थोड़ा हेल्प करूँगा और बाकी मेरी पर्सनल लाइफ है। तो आप मैच्योर हो जाते हो। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, बट दिस इज़ वन ऑफ द थिंग आई लर्न फ्रॉम माय जॉब। Raj is asking which domain is good in SaaS, banking or clinical for more job opportunities. Both are good. They pay at the end of the day. You need money, right? They pay well. Umesh, uh, which profile is safe? Every profile is safe if you have good experience, if you have knowledge. If you don't have knowledge, no profile is safe. Muskan Gaming is telling, sir, by the way, very thank you for giving such good information and staying with. Thank you, Muskan. चेतन, इंडिया में मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर का स्कोप, नो आइडिया चेतन फॉर दिस। एक्सएमएल सीखना ज़रूरी है क्या, लाइक डिफाइंड दैट? नो राठौड़, इन द बिगनिंग नो। विवेक इज टेलिंग, सर मेरा नवंबर 2022 में एक कंपनी क्लियर हुआ था, फिर उन्होंने बोला कि आफ्टर ग्रेजुएशन ज्वाइनिंग होगी और अब तक कुछ अपडेट नहीं हुआ, तो मुझे डाउट है कि ये लोग, तो एक बार फीडबैक ले लो और डाउट मत करो, क्योंकि मेरे भी एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था। उनका दिसंबर में इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। अब जाके रिसेंटली उन्होंने दिसंबर के बाद फैब में जाके उन्हें ऑफ़र लेटर दिया, ठीक है। सडनली सब प्रोसेस फास्ट करके उन्होंने ऑफ़र लेटर रिलीज़ कर दिया। तो हाँ, उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया, दिसंबर के बाद जैन के बाद फैब। कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं हायरिंग को लेके, टीम को लेके, या so you should connect and get an idea with them, like what's going on. I think max 6 to 7 month max. Call with Shubham asking how much can you reveal how much you are getting paid from YouTube? See, I am very much comfortable for revealing this. The YouTube income is like very less. Even I cannot pay the light bills. Okay. Even I cannot afford the internet. The live I'm doing now from the YouTube pay, I cannot afford this live as well. So that's a reality. सो यूट्यूब में क्या होता है, कॉल विद शुभम, जो जिनकी वीडियोस वायरल होती है, जिनको 1 लाख 2 लाख व्यूज़ आते हैं, उनके लिए वो बेटर होता है, जो प्रमोशंस करते हैं। तो आप देखोगे मेरे चैनल पे कोई प्रमोशन मैं नहीं करता, फर्स्ट थिंग। क्या प्रमोशंस मिलते नहीं? हाँ, प्रमोशंस मिलते हैं, बट मुझे अजीब लगता है, क्योंकि मैं खुद उस प्रोडक्ट को नहीं जानता, मैं उसको कैसे प्रमोट करूँ? ठीक है, कि यहाँ ये कर लो और आप ये बन जाओगे। एंड उनका मोस्टली क्या होता है कि आप इंटीग्रेटेड एक वीडियो ऐड कर दो कि ऐसा-ऐसा बोल दो, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, प्रमोशन मैं नहीं करता। और वीडियोज़, हाँ, वीडियोज़ पे अगर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो व्यूज़ मतलब मेबी इनकम बढ़ेगी। बट एज़ पर नाउ द व्यूज़ आर नॉट इवन इनफ लाइक कि मैं अपने
इंटरनेट बिल और लाइट बिल पे कर सकूँ. सो यूट्यूब एज अ पैशन इट्स गुड. एज अ सोर्स ऑफ इनकम दैट्स नॉट गुड गाइज. वाई एम टेलिंग दिस? यूट्यूब कभी भी, यूट्यूब किसी रीज़न की वजह से आपका चैनल बंद भी कर सकता है. ओके, समटाइम्स यू विल गेट व्यूज, समटाइम्स यू विल नॉट गेट व्यूज. सो आप उस पर डिपेंड नहीं रह सकते. या बट लाइक इफ यू लाइक टू कनेक्ट पीपल, इफ यू लाइक टू शेयर द इंफॉर्मेशंस, देन इट्स गुड. Umesh, not yet. Like as of now, like I don't think you should switch the company. But if you have good experience, good knowledge, then you can. Which questions will be asked for experienced person for 2 year in first and second round? Sumit, but in which profession you are asking? Clinical, banking, insurance, or for which role? Umesh is asking. Thank you, sir. Okay. प्रोपेगेंडा बस्टर इज आस्किंग, सर मैं एमटेक फ्रेशर हूँ, एनआईटी अगला, क्या एनआईटी टैग हेल्प? ऑफ कोर्स करेगा, बट अगर आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज है तो देन इट्स वेल बेटर, राइट? एट द एंड ऑफ द डे कंपनी को चाहिए होता है स्किल, नॉलेज. आप थोड़ा खुद से एक्वायर करके जाओ, खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करके जाओ, तो इट विल बिकम ईजी फॉर द कंपनी एज वेल टू गिव यू गुड पे. क्लिनिकल SaaS प्रोग्रामर. सो सुमित, आपने क्या फेक सर्टिफिकेट बनाया क्या? सॉरी टू टेल यू दिस, बट आप पूछ रहे हो ना 2 साल के एक्सपीरियंस पे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं. तो मोस्टली मुझे लोगों ने तभी ऐसा पूछा है. कभी कभार मुझे क्वेश्चन है पूछते हैं, मतलब एक्सपीरियंस पर्सन, कि 1 ईयर पे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, 2 ईयर पे क्या क्वेश्चन पूछते हैं. तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन लोगों ने मुझे बताया कि हाँ फेक सर्टिफिकेट है इसलिए पूछ रहे हैं. सो मैं आप फिलहाल आपके क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ, चाहे आप फेक यूज़ कर रहे हो, रियल, व्हाट्स ऑन. सी, जब भी आपका एक्सपीरियंस 1+ ईयर हो जाता है, ओके, मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टडी बेस्ड होते हैं कि आपने किस स्टडी पे काम किया, आपने कौन से टेबल, लिस्टिंग या एच डी एम एडम डेटा सेट्स क्रिएट किए, आपको क्या डिफ़िकल्टीज आई स्टडी में, लाइक किस चीज़ के ऊपर स्टडी थी, लाइक रीनल और लाइक कैंसर, किस चीज़ के ऊपर स्टडी थी, कौन से फेज पे आपने काम किया, तो क्या वो स्टडी में क्या कोई लाइक प्रॉब्लम, मतलब स्टडी सक्सेस हुई कि नहीं, मतलब ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं. ओके, एंड फिर शायद शायद कुछ टेक्निकल क्वेश्चन, शायद एक बार कंफर्म करने के लिए आपसे कुछ पूछें, नहीं तो ना के बराबर फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे. मोस्ट प्रॉब्ली जो आपने लास्ट काम किया होगा उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. तो जो भी आपने लास्ट काम किया है वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी होगी. दैट विल बी क्वेश्चंस फॉर experienced people in any domain. Tarun is asking, sir, can I go with production engineer role? Yes, Tarun, of course. Propaganda Buster is asking, आपके लेफ्ट चीक में डीप कट कैसे लगा? ये बदमाशी करने का नतीजा है. So like in my childhood I used to play a lot with water, in water. So पहले स्टील की बाल्टियाँ होती थी, राइट? सो आई थिंक आई वॉज स्टैंडिंग, लाइक वो बाल्टी के बकेट के ऊपर मैं खड़ा था, एंड वो नल होता है पकड़ के. सो मैं शायद गिरा, एंड बाल्टी का जो स्टील की जो बाल्टी होती है उसका गोल सर्कल होता है ना, सो मुझे एग्जैक्टली ऊपर लगा था, आंखों के पास, जस्ट यहाँ पे. सो एज के साथ ये स्किन मेरे ख्याल से स्ट्रेच होती है ना, तो ये नीचे आया थोड़ा. सो दैट्स द रीज़न. तो बहुत बचपन में लगा था. या Sumit Rangraju, no sir, after joining only first time giving intro because of that
Okay, okay. That's fine, Sumit. So maybe like what I told that might help you to crack the interview. You know how many days it is required to learn Python and SQL for data analysis? Lenovo, for this, I have already made a video on my channel. Uh, सेल्फ मेड डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर, मैंने एक डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर के साथ वीडियो बनाई है, तो उन्होंने पूरा खुद से किया था पाइथन के साथ। तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे, ठीक है। तो उन्होंने पूरा अपना जर्नी शेयर किया है, कैसे खुद से क्या किया, एवरीथिंग यू कैन गो एंड चेक। Tarun is asking, is that role will help me to get an analyst role? See, Tarun, what do I feel? Any work you're doing that is going to help for your next role, for sure. Okay. If you're doing it in a better way or doing it like you're learning a lot or learning healthy things or learning the things properly, in short. So that role is going to help you in your next role, even it is not relevant. So, what will be the best part to get hired? Like, what will be the best way to get hired as a data analyst? Suppose you're working as a production engineer in healthcare domain, and you want to work data analyst in healthcare domain. So, before giving the interview, if you learn a data analysis tool which is used in healthcare domain like SAS, okay, or Python or R. As of now, SAS is having the market 90% of the market size. So, yeah, that will help you to crack the interview. The chocolate factory hunter. Sir, girl asking over smart questions in interview. How to count number of window of building, etc. So guys, I don't know like what's the meaning of asking this kind of question. Yeah, there can be some scenarios, there can be few things, but I'm not understanding like counting the number of these things, कितनी सीढ़ियां हैं, कितने windows हैं. So I don't feel like you can simply say no, I don't know, or like, so if they are asking like how to count number of windows of building, etc., हाउ टू काउंट सिंपली लाइक, देखो काउंट करना है इसका एक सिंपल सा लॉजिक जो मुझे लगता है मैं बताता हूँ आपको। सी मोस्टली क्या होता है कि हर फ्लोर पे एक पैटर्न कंपनी, मतलब एक बिल्डिंग है ना, वो समझो कि किसी बिल्डर ने बनाया या कॉर्पोरेट ऑफिस है मोस्टली, तो किसी बिल्डर ने बिल्डिंग बनाया फिर कॉर्पोरेट ऑफिस को दे दिया। तो अगर अगर वो स्टैंडर्ड ही है, अगर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए तो वो पैटर्न हर जगह फॉलो होगा। तो फर्स्ट फ्लोर पे जितने विंडोज़ होंगे, ठीक है, वही ऊपर भी फॉलो होंगे स्टैंडर्ड पैटर्न। तो यू कैन मल्टीप्लाई, जितने माले की बिल्डिंग होगी उतनी बार मल्टीप्लाई कर लेना। सो दैट कैन बी वन ऑफ द स्टैंडर्ड वे। तो अगर आपको फर्स्ट फ्लोर के एक फ्लोर के विंडोज़ पता है और जितनी फ्लोर की बिल्डिंग है मल्टीप्लाई, सो दैट दिस माइट हेल्प यू। विशाल, यस। Propaganda Buster, LinkedIn. Bhagat, no. MD Mahfouz. Mahfouz, you can check, like there are tons of institute. Just connect to them. Connect to 10, 20 or 15. You'll surely get some idea. Anjanya Aligar. Sir, I'm BCom student. Which is best, SAP or SAS? See, like in SAP and SAS both are good. The only difference is in SAS, it is must to do coding. In SAP, there is an option, uh, functional and technical. In functional, you don't need to do coding.
So because of that functional, a lot of people have learned that functional module, and so this like a population, the number of applicants in SAP, that got increased drastically from here to here. So that is one thing you need to keep in mind. In SAS, because coding is there, so less people are there compared to SAP, so the chances are a little more. That's all the difference. Now you can think, and if you think you have time, so you should do MBA. Along with the MBA, learn SAS for data analysis. That will be enough for you. See, the first and foremost thing will be the adapting the technology. The first time you'll get this much exposure of technology, of coding. So you need to understand from the grassroots level, okay, from the fundamental level. So that's a basic. And the second thing will be the communicating and understanding people. So this too. Aditya, why you are depressed? Matlab, what happened? Indian army talks. No, I live with my family. Wazid is asking, working as a test engineer, I'm planning to switch. Data science, Wajid. SAS easy. Rathod, it's your answer, SAS easy. Buster, yeah, the combination is good. So guys, I think I have answered for most of the question you have asked. Some of the question I might have missed today, but yes, again on next Sunday, we can again have the live session like today around 9:30 p.m. So for now, you can just subscribe the channel so you will get the notification for next time. So thank you everyone. Bye bye everyone, and good night everyone.